हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दिस इज एराज मैं हूँ इतना सा हो गया हम भूल गए अपनी ओपनिंग दिस इज क्रिकेट टाइम मैं हूँ एराज और मेरे साथ है नीरज ये मेरे साथ वो है जो मेरी बेटी के साथ होता भूल जाती है ब्लूपर क्या हाल है नीरज कैसे हो यार सब ठीक ठाक है राज भाई। बिन सच अ लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात हो गया सर, रियली हैप्पी टू सी यू। Yeah, so am I. It's been such a long time. Faiz ने मेरा साथ दिया बीच में. I don't know if you saw an episode where we brought on Shayan and यस। Bilal, who are very, have been playing in the Chicago area for a long time. So they are also very, cricket avid cricket fans. उनको भी मुझे जब मौका मिलेगा लेके आऊंगा. लेकिन तुम्हें तो बहुत मिस किया यार. लेकिन आई थिंक वी रियलाइज कि ये T20 V20 को तो घास वास नहीं डालते नीरज, बड़े लोग हैं. तो अब जब टेस्ट मैच की बारी आई है तो नीरज जाग गए हैं. आई थिंक बड़े बड़े लोग से ज्यादा बूढ़े लोग हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि 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 इंटरेस्ट तभी वापस आ जाता है गेम में व्हेन देयर इज अ टेस्ट मैच गोइंग ऑन, एंड स्पेशली टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन इन पैरेलल, इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेइंग, व्हिच इज एन अमेजिंग टाइम। Right, right. I mean, it was so amazing कि साथ साथ मैचेस चले हैं. Two of very very exciting test matches. Or oh my god, I mean, whoever says that test cricket is dead, we needed to see these two games. I think everybody who watched them were like on their feet and at the edge of the seats. तो without any delay, पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर हम आपके मुस्कुराते हुए चेहरे से इंडिया की बात करेंगे. तो हम पहले मेरा उदास चेहरे से पाकिस्तान की बात करते हैं. तो लेट्स गिव इट अ शॉट. तो पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का खेला गया. पाकिस्तान वेस्ट इंडीज 1 by 1 विकेट. पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में बनाए 217 रन. इसमें there was no real performance. The only standout performer again was फवाद आलम, जो कि पहली इनकी एक्चुअली हाफ सेंचुरी है जो सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाई है. बट एवरी विकेट्स केप्ट फॉलिंग अराउंड एंड फहीम अशरफ ने अपनी टेस्ट क्रेडेंशियल्स को एटलीस्ट जो है थोड़ा सा सॉलिडिफाई किया है अगेन. यहाँ पे फिर उन्होंने इनिंग सेविंग 44 बनाए. तो एक डिसेंट टोटल क्या कहूँगा बिलो पार ही था, लेकिन फिर भी 217 तो तक पहुँचे. जवाब में वेस्ट इंडीज जो है क्रेग ब्रैथवेट की 97 वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस. उसके अलावा जेसन होल्डर के नीचे से 58 थे. उसके अलावा कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, लेकिन ये स्टिल वर एबल टू टेक अ लीड बाय मेकिंग 253 रन. यहाँ पाकिस्तान मेरे ख्याल में मैच हारा. सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान जो है वो बेसिकली कुड नॉट डू एनीथिंग एट ऑल. आई मीन द हाइएस्ट स्कोरर वो बस बाबर आजम who made 55. लेकिन आई थिंक काइल मियर्स की जिस तरह की बॉल पे वो आउट हुए, आई थिंक इट वाजंट द बॉल ही वाज सपोज्ड टू गेट आउट ऑन. और काइल मियर्स कोई आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं था, लेकिन बाबर आजम should have gone on and made a bigger score than he did over here. Like, anyways, he was the only one who made some score. They only were able to make 203 runs. So I think 160 कुछ की ऑट की लीड थी पाकिस्तान की. जवाब में जो फाइनल सेशन हुआ है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट. पाकिस्तानी बॉलर्स रोड बैक. शाहीन आफरीदी ने पूरे टेस्ट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की. उन्होंने शुरू की 3 विकेटें ली. फ़हीम अशरफ ने अच्छा सपोर्टिंग एक्ट प्ले किया. फिर हसन अली स्टेप्ड इन. Shaheen Afridi, they kept bowling well. Jermaine Blackwood was the only one who was able to make cross 50. लेकिन आखिरी विकेट का स्टैंड विद कीमार रोच, और फिर जेडन सील जो मैन ऑफ द मैच भी रहे, जिन्होंने 5 विकेटें ली. टीनेजर फर्स्ट टीनेजर टू डू सो फॉर द वेस्ट इंडीज. दे पाकिस्तान जो है इनमें से किसी को हिला नहीं पाया और नहायत ही हार्ट ब्रेकर पाकिस्तान ने लूज किया. तो नीरज, डिड यू हैपन टू सी द हाइलाइट्स और द गेम? तो आप आई वाज वो हैं. इट्स अ हार्ट ब्रेकर। आई मीन, फर्स्टली रिकॉग्नाइज जरूर करूंगा, एंड टेस्ट मैच, द ब्यूटी ऑफ अनदर टेस्ट मैच, राइट, कि अगर आप पहले इनिंग्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ रिडेम्पशन, एंड पाकिस्तान केम क्लोज थ्रू देयर बॉलिंग परफॉर्मेंस. मैंने ना हाइलाइट्स देख पाया ना गेम, लेकिन आई डू रिकॉल रीडिंग सेशन बाय सेशन व्हाट वाज द परफॉर्मेंस. मैंने ये जरूर पढ़ा था, आई थिंक रेड द फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर्स दोनों के, and the fact that Jason Holder, Seals, they had a very strong hold on the Pakistani lineup, early inroads,
एंड वो तो जरूर नजर आया दैट टॉप ऑर्डर सीम टू हैव हैड सम ट्रबल्स. लेकिन मैं एक्चुअली गेम फॉलो इवन लास्ट मिनट तक कर नहीं पाया. तो इट वाज व्हेन आई फाइनली ओपन क्रिकेट फॉर वंस अगेन, आई सेड ओ माय गॉड, ये दोनों साथ में हो रहे थे. did not have Yeah. didn't have an opportunity to check it, to be honest. लेकिन I would say losses and close games also build character. ये हम काफी वक्त से बात करते आए हैं. Sometimes losses bring team together and they are able to show a fighting spirit. लेकिन I'm sure you must have been following very closely, Raj bhai, as in from the time की team selection के हिसाब से लोगों को up down move करते हुए, what was your observation on the way the team came together for the test match, and what characters did you find who made a difference? I think ये सीरीज ही कुछ पूरी वेस्ट इंडीज का टूर ही बिल्कुल ऑफ गया है. आई मीन रिमेंबर दिस वाज अ 5 T20 टूर. 3 टेस्ट मैच होने थे, एक टेस्ट मैच कैंसिल किया गया टू अकोमोडेट अ T20 इन प्रेप फॉर द वर्ल्ड कप. उसमें से एक ही T20 हो पाया. It was all washed away. So basically, this team was preparing for a T20, kind of mindset. वो भी पूरा कुछ मतलब it was a wasted tour essentially in terms of T20. और उसमें कुछ अब एक मैच जीत गया, it meant nothing to all. तो हमने उस पर कोई वीडियो करने की कोशिश भी नहीं की because it really meant nothing. जहाँ तक टेस्ट मैच की बात है, पाकिस्तान plays such few test matches. अब आपने पूरी टीम जो है ऑलमोस्ट ही चेंज हो जाती T20 से. बाबर आजम और रिजवान और मेरे ख्याल में बॉलर्स के अलावा फ़हीम, शाहीन शाह और हसन अली, ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है. उसके अलावा आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप भी चेंज हो जाती है. दीज आर पीपल हु हैव नॉट प्लेड एनीथिंग. सडनली अब ये 3 महीने के गैप के बाद टेस्ट मैच खेलने आ जाते हैं. और दैट इज़ अ बिग डिलेमा. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये, आई थिंक सिलेक्शन इश्यूज हैं. पाकिस्तान की बॉलिंग, अगर जारी बात है बॉलिंग ने पुल बैक किया. शाहीन हैज़ बीन बॉलिंग वेरी वेल विद द न्यू बॉल. आई थिंक शाहीन ओल्ड बॉल से अभी भी शाहीन इज नॉट दैट good of a bowler. He's a good new ball bowler. Old ball se abhi tak I think he hasn't worked it out how to take wickets as effectively with the old ball. He's a good bowler, no doubt about that. Pretty much leader of the pack right now. Hassan Ali, of course, experienced up to seasoned campaigner हो गया है वो. और उसका big heart से bowling करता है. Batting में भी he made like an odd 30 in the second innings जो ये score हुआ, वरना तो मैच बहुत पहले खत्म हो जाना था. I think where Pakistan is missing a trick is इमरान भट्ट आपका ओपनर है. He's an excellent slip catcher, like really excellent slip catcher, but that cannot justify his place in the team if he can't perform with the bat. बहुत chances मिले हैं पाकिस्तान के अंदर भी मिले हैं, but he hasn't like just stood out. So I think they'll have to reevaluate. आबिद अली का को जो slump आया है वो काफ़ी alarming है because he was so promising when he started off. Maybe people have started to find him out. I think यहाँ पे वेस्ट इंडीज में उनको मसला बाउंस का हुआ कि जरा सी हाई बाउंस होना शुरू हुई, everybody started getting into problems. Even like बाबर आजम जो आउट हुआ है, कायल मेयर्स इज अ 130 ऑट बॉलर. थोड़ी सी बाउंसी बॉल यानी लीडिंग एज लगा है. देन आई थिंक अब्बास की बात करें, अब्बास इज अगेन वेरी गुड विद द न्यू बॉल, वेरी एक्यूरेट. प्रॉब्लम अब्बास की इसकी पेस बहुत नीचे आ गई है. लाइक इन द सेकंड थर्ड स्पेल्स ही इज लाइक 120s. So I think batsmen get enough time to just defend him and not mess with him and not get out. मतलब इस लेवल पे 128 तो कुछ बॉलिंग नहीं होती. एटलीस्ट 133 134 होनी चाहिए आपकी. And I think for me the biggest disappointment is Yasir Shah. If you remember, I mean 2 या 3 साल पहले जो लास्ट वेस्ट इंडीज का टूर हुआ था जो पाकिस्तान जीता था, आई थिंक मिसबा वाज स्टिल देयर, मिसबा एंड यूनुस. लास्ट टेस्ट उनका था जो आखिर में यासिर शाह ने विकेट ली थी. He, I think, just maybe got 1 wicket in the first innings, no wicket in the second innings, and he wasn't even bowled that much. वो I think is the biggest disappointment, क्योंकि टेल एंडर जहाँ पे अटके थे वहाँ पे यासिर शाह का गेम होना था. I mean फास्ट बॉलर को चलो खेल गए, एज लग गया, लेकिन it was the leg spinners job to finish the series off. लेकिन या तो बाबर आजम ने गलती की कि ट्राई भी नहीं किया, या फिर ये कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं था यासिर शाह पे. तो ये काफ़ी सारे इश्यूज हैं छोटे छोटे. अजहर अली की डिप इन फॉर्म, अजहर अली डिडंट परफॉर्म इन बोथ द मैचेस. फवाद आलम के और पहली इनिंग में फवाद आलम और फ़हीम अशरफ थोड़े बहुत खेल गए, एंड देन सेकंड इनिंग में बाबर आजम वाज द ओनली वन एंड हसन अली. तो देन दैट्स नॉट अ टीम, राइट? सो देयर आर सिवियर इश्यूज. अगेन इतना कम खेलते हैं टेस्ट मैच के जब तक नई सीरीज आती है सब भूल चुके होते हैं क्या हुआ, फिर वही बंदे आ जाते हैं. तो आई थिंक सिलेक्शन में और फिर देन सिलेक्शन में जो टीम अवेलेबल है
I think that's not that bad. The playing 11, I think, is a bigger issue. Who actually Correct. gets selected to play in the game? Correct. And I think selection जितना important होता है ये इसका I would say the main test will end up happening when you have built series and series together. And कोई टीम जब साथ में खेले लंबे अरसे तक, I mean, of course, the home series against South Africa, all of those times when you had a few heroes come up as well, कि एक टीम बिल्ड हो रही थी, in a sense कि, but those are different conditions. And यहाँ पे दूसरे condition में experience करना, I think it takes longer term planning. But रही बात, of course, maybe Pakistani management might be doing the best with what they have, with their eyes set on the World Cup. And in that sense, टीम भी उसी तरह बन गई. I think that is, as an external observer, मुझे जरूर ये भी दिखाई दिया. I saw that all format players also, there are few and far in between जो consistent performers तीनों formats के through आ रहे हैं. That also seems to be, there's a core of the team who perform once in a while. So, and one surprising thing, and maybe looking at जैसे openers, बदले जा रहे हैं, try किए जा रहे हैं. Someone with the class of, say, Fakhar Zaman, and what does he bring to a test match, and उसे किस हद तक पहले ट्राई कर चुके थे, और अब why is he not in the fold? That is one thought that came to mind, because उस तरह का बंदा जो लंबी और impactful innings खेल सकता है, why is he not being favored in the test match fold? I think फ़खर जमान का इशू है कि फ़खर जमान ने 193 लैश जो उसकी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी, वाज आउटस्टैंडिंग इन साउथ अफ्रीका, जो चेस में 193 बनाए थे. Correct. पाकिस्तान लॉस्ट बट Correct. स्टिल. लेकिन उसके बाद फॉर सम रीजन साउथ अफ्रीका के बाद जो इंग्लैंड की सीरीज भी, ही परफॉर्म रियली बैडली इन दैट सीरीज. और वनडे T20 थे, टेस्ट तो मेरे ख्याल में था नहीं उसमें, तो दे ही डिडंट परफॉर्म वेल. तो आई थिंक जो फॉर्मेट का वो एक्चुअल प्लेयर है उसमें परफॉर्म, इफ यू रिमेंबर मिकी आर्थर एक्चुअली वांटेड फ़खर जमान to be part of the test side. Before that, he wanted Sharjeel Khan to be part of the test side, and Sharjeel Khan ने एक test match खेला भी, and he scored like a blistering 60 or 70. तो if he hadn't अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी होती शर्जील खान ने, तो मे बी वो मतलब कहाँ पहुंच चुका था, टेस्ट का भी शायद रेगुलर ओपनर होता. लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं कि यू प्लान समथिंग एंड देन मिकी आर्थर भी नहीं रहे, अब ये मैनेजमेंट है. आई डोंट नो इनकी क्या माइंड सेट है. आई हैव अ I'm becoming more and more convinced कि strategically ये लोग lag करते हैं. There's certain issues where I think Misbah and Waqar become very conservative. I don't know whom they calls the true shots here. If Misbah does, he just is very adamant on making change. और घबराते हैं मतलब change करने से ना, या change करते भी हैं तो I don't know how they make it. So not too happy with how the team is being, the playing 11 is being selected. एंड देन जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है, तो अगेन एज पॉइंट बीइंग के फॉर एग्जांपल नुमान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एंड यू रिमेंबर ही इज बीन अ Oh मेजर. yeah, great performance. यासिर शाह वाज प्रेफर्ड ओवर हिम, Yeah. एंड आई थिंक दैट वाज बैड, क्योंकि इमरान ने तो ऑलमोस्ट सेंचुरी भी मार दी थी, और बॉलिंग में Correct. ही बीन टेकिंग विकेट्स लाइक दिस. सो व्हाई वुड यू प्रेफर यासिर शाह अनलेस यू आर गिविंग यासिर शाह फाइनल चांस कि if this is it, if they can't perform, you out for good. होता है, हर किसी का टाइम होता है. आई मीन आई फील सैड फॉर यासिर शाह, ही इज बीन सच अ टॉप परफॉर्मर, लेकिन आता है लोगों की जिंदगी में टाइम व्हेन दे जस्ट गो डाउन. Correct. परफॉर्मेंस गिर जाती है, आपकी स्पिन नहीं हो रही होती, हम एज फैक्टर आने लगता है, 10,000 चीजें यार स्पोर्ट्समैन की लाइफ में. Correct. ब्रूटल स्पोर्ट, राइट. सो फखर, योर पॉइंट इज वेल टेकन कि फखर जमान को ओपन करा सकते हैं, लेकिन इनको डर ही होता है कि हार जाएंगे हम. वो एक बात है ना यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेयर्स में नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं है. उसके लिए थोड़ा सा ना आपको सक्सेसर चाहिए होती है ऑन द ट्रॉट विद द सेम बंच ऑफ प्लेयर्स, जो कि इंडिया कर रहा है सेम बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ. जबकि हमने पिछली बार बात की कि शास्त्री और विराट का कॉम्बिनेशन क्या सही है क्या गलत है, लेकिन विराट ने हमें जो है फिर गलत मुझे तो खैर नहीं, मैं तो सपोर्ट करता हूँ नीरज की, थोड़ी गलत, नीरज भी पूरी तरह नहीं, लेकिन नीरज हैड ऑल्टरनेट ओपिनियंस एज वेल. लेकिन देखते हैं कि उसके जवाब में विराट ने लगता है बात सुन लिया और जवाब दिया नीरज को. तो दूसरा जो टेस्ट मैच खेला गया, बड़ा टेस्ट मैच, वो था इंडिया और इंग्लैंड का. बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, वेरी वेल फॉट. इंडिया ने पहली इनिंग्स में 364 रन्स बनाए,
इसमें स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ओपनिंग स्टैंड शानदार, रोहित शर्मा के 83 एंड देन राहुल के 129. एक वक्त लग रहा था कि इंडिया हैज ऑलरेडी रन अवे, एंड देन जेम्स एंडरसन, हमारे एज के ग्रुप के यंग आदमी, he he fired back. Kohli 42 बनाए. I mean he was the other performer. जडेजा और पंत ने अपनी टिपिकल इनिंग्स खेली. 40-37 they got a very good score of 364. England की first innings में there was only thing rude. That Oh was my God. Burns 49, Shibley 11. Shibley पता नहीं क्यों हंसी भमीद चले. He's been coming back after a long break. To give him the doubt for this test match. Joe Root was the standout performance 180. Bairstow made a good 57. Supporting acts by Butler and Moeen Ali. And 391 बनाए. They actually took a lead, which nobody thought they would at one point in time. जवाब में इंडिया जो है सेकेंड इनिंग्स में लगा था क्रम्बल करेगा. राहुल और रोहित शर्मा दोनों आउट हुए मार्क वुड की तेज बॉलिंग पे. पुजारा मेड अ 45. आई थिंक एट वन पॉइंट ही वाज लाइक 12 runs of 100 balls. इसमें बड़ी क्लैपिंग भी हुई. That's Pujara 21.8. One first run of the 35th ball. 21.8 का स्ट्राइक रेट है. तो इनको तो चेन्नई वालों को दुआ देनी चाहिए कि इनको आईपीएल में सिलेक्ट किया उन्होंने. ऑनररी एम्बेसडर है स्ट्राइक रेट पे. खैर, कोहली को सैम करन की बहुत ही ज्यादा सैम करन बोल्ड अ गुड बॉल टू कोहली टू गेट हिम आउट. रहाणे मेड अ गुड 61. पंत ने 22 बनाए. लेकिन असल मेरे ख्याल में क्रेडिट जाना चाहिए शामी और बुमराह को. Oh yes. 56 for Shami and Bumrah 34 got India to a total of 298, जहाँ एक्चुअली डिक्लेयर किया कोहली ने, मतलब ऑल आउट भी नहीं हुए. Yes. और उसके जवाब में जो है इंग्लैंड की कमर तोड़ दी. 120 पे ऑल आउट किया. इसमें बुमराह, शामी, ऑफ कोर्स शर्मा, शांत, जसप्रीत बुमराह की तो बॉलिंग होती है. आई वुड लाइक टू रियली गिव क्रेडिट टू मोहम्मद सिराज. Oh yes. आखिर में जो मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग कराई है, आई थिंक दैट वाज द एनर्जी लेवल एंड द पैशन एंड द लाइंस ही वाज बॉलिंग वाज फिनोमिनल. और बटलर का पर्टिकुलरली आउट करना. That's all. तो आई एम गोना हैंड इट ओवर टू यू नीरज. व्हाई डोंट यू डायसेक्ट द मैच फॉर अस? Absolutely. Great summary, Raj bhai. Unbelievable to an extent, क्योंकि day 3 के बाद जब Root had really gotten, and credit to Root को ही देना चाहिए, क्योंकि काफी अरसे से he has been the kind of standout performer. चाहे वो इंडिया में खेलें या यहाँ के खेलें, the one person जिसको हिला नहीं पाए, which is Root. And so really fantastic scores. I should commend him for that. And उसे support काफी कम मिला, लेकिन even as a single person he has pieced together many important partnerships. So सबसे पहले credit where credit is due. लेकिन on the other side, James Anderson. So one of my friends observed this, that probably batting and bowling top class combination Root and Anderson जो इंग्लैंड के लिए हैं और काफी अरसे से रहे हैं, that is they just continue to be the people to make a difference. इस टेस्ट में आते आते even James Anderson was considered unfit at the start. Broad तो anyways बाहर हो ही गए, लेकिन the person replacing Broad brought the most energy into the game, Mark Wood. I mean, credit to him as a absolutely जी जान लगा देने वाला bowler. I like such bowlers, being a fast bowler myself. So it is a good matchup. Lords में around Independence Day, playing against England, you can imagine, the other subtext and the sub contexts. I think the game was kind of won and lost. एक बड़ा ही interesting session हुआ where Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara seemingly got stuck, right? Two men who have been woefully out of form, जिनके पीछे हमेशा एक क्वेश्चन लगा रहता है कि भाई they are one innings away from being dropped, and Kohli and the management persists. 21 का strike rate and 41 का strike rate strike rate लेके these two gentlemen basically tired the bowlers. They made sure that they don't give their wicket away, and Rahane just उसे advantage लेने की कोशिश कर रहा था और Rahane out हो गया. लेकिन वो जो एक period of play था, this also gave me the Sydney test vibe. It gave me that Pujara's innings of holding one end and उसकी worth वापस से उसने दिखा दी.
आई एम श्योर दैट इस मैच के एनालिसिस में ये भी सोचा जाएगा कि इतना इतने बॉल्स खेलने के बाद सिर्फ 45 रन बनाने या ओनली 62 रन बनाना, हाउ यूजफुल दैट इज गोइंग टू बी। एंड अगर हम ये मैच हारते तो यही पार्टनरशिप उस वुड हैव बीन प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस, लेकिन हम मैच बचा पाए is also because this partnership happened. So that's a very unique partnership. लेकिन लास्ट चीज ये कहूंगा कि दिस इज द वंस इन अ जनरेशन, वंस इन अ लाइफ टाइम bowling group. And Mohammad Siraj had three occasions where he took 2 wickets each in the over. Ishan Sharma had one over where he took 2 wickets. And sessions में और 2 बॉलों में पूरी मैच को बदल देना, that was the full contribution. And जब 2 bowlers थक रहे थे, Shami will come and bowl a beautiful ball, or Ishan Sharma will come and take 2 wickets out of nowhere. Jadeja, of course, I think I missed Ashwin, to be very honest, in this game, because fourth day में Ashwin would have been lethal on a pitch like this one, like Moeen Ali was. लेकिन इस तरह की bowling performance and the way they hunted them down in a pack, that was just amazing. So the bowling won us the game. The bowlers with their batting won us the game. And Australia के बारे में और Australia से इस वक्त आते वक्त, you can observe the tail. The tail has only performed when there's backs to the wall and they've surprised you. तो विक्रम राठौर हमारे बैटिंग कोच है, उनका एक इंटरव्यू हुआ था एंड उन्होंने कहा था कि आई थिंक इट्स टाइम दैट द टेल फोकसेस ऑन देयर बैटिंग, एंड तब से लेके अब तक देयर हैज बीन अ फुल फोकस ऑन गिविंग देम शॉर्ट टारगेट्स कि अब वहां जाएं और आप 30 बॉल खेल के वहां टिके रहें, उसके बाद रन आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे 30 बॉल आपसे खिलवाने हैं. एंड सिंस दैट टाइम पुअर शॉट्स एंड पहले बॉल में स्वाइप, इस तरह के जो ओकेजन्स हो रहे हैं टू गेट पीपल आउट, वो कम हुए. एंड इन द फर्स्ट 2 games itself, the tail has contributed more than they did in the India series. क्योंकि तो ऐसा लगता था कि भाई अगर 7 विकेट चले गए, मतलब हमारी टेल जब शुरू हो जाती है उसके बाद तो बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. लेकिन लक कह सकते हैं, दे रोड देयर लक, लेकिन देयर इज अ प्रिपरेशन दैट गोज बिहाइंड इट. एंड जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इतने वक्त से दिखाते आए हैं, आर टेल इज बिगिनिंग टू शो सम रेजिस्टेंस. इट इज अ फुल टीम एफर्ट, एंड इंग्लैंड को लॉर्ड्स में हराना cannot be a one-man effort. And even though KL Rahul won man of the match, my men of the match are Mohammad Siraj, for his contributions, definitely. And I would say, I would actually give it to the bowling unit as a pack, because they really brought it. I mean, fantastic. अगर पहला टेस्ट मैच याद करें उसका रिजल्ट नहीं आया, आई हैड अ फीलिंग अगर वो होता तो इंडिया वुड हैव वन द गेम एंड वन द सीरीज. ऑनेस्टली, आई मीन लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि इंग्लैंड का चांस ज़्यादा था. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई वॉच्ड द फर्स्ट टेस्ट मैच एक्चुअली मोर देन द सेकंड टेस्ट मैच फॉर वेरियस रीजंस. एंड द वे बुमराह की बॉल जिस तरह ये लोग स्विंग कर रहे थे यार, मतलब अनप्लेबल काइंड ऑफ डिलीवरीज. आई मीन इतने वाइड एंगल से आपकी बॉल मिडिल स्टंप पे आके, रोरी बर्न्स को जो एक उसने आउट किया था बुमराह ने, Oh yes. cross guy, and then the next ball comes and then jags back that sharp. I mean, that is incredible bowling, and those are unbelievable angles. Correct. I mean, Ishan Sharma ko na bhule. I mean, how old is he now? How long has he been playing? Oh yeah, easily it's 15 years. Yeah. I mean, and you can see that Ishan Sharma used to be hit all over the park when he was young. And the way that guy has improved to become like such a good bowler is unbelievable. I mean, how do you... This is what you do as a player. You keep improving. To the point that now you can swing the ball both ways, and from very good lengths, which he wasn't able to do before. If you remember, Ishan Sharma used to be hit like everywhere, and then he would bowl some good spells, but then he would get really beaten out. That is not happening. He's just focused on Test cricket, and that's what he is. Shami की अगर बात करें, Shami again शुरू में मतलब किस तरह के बॉलर थे, now he's improved so much. He's become reverse master, जो कि लेकिन सिराज को इसे देनी चाहिए कि सिराज के मतलब people forget कि he debuted in Australia. So he's been basically, this is like his 3rd test series, right? If I'm not wrong, 3rd. You're right. Second England थी जो इंडिया में खेली गई, and then this one, right? So सिर्फ वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हटा दें,
हाँ, And I don't think yeah, Siraj played in that game, if I'm not wrong. I don't he did remember. not he did not play the Did game. not Yeah, play. So इसकी third से series है यार. That's why I'm giving that guy a lot of credit because he's bowling like and he has. I think Kohli is basically gravitates towards guys who has the same kind of attitude as him. he does. And then I think the advantage now is कि इतने लोग मौजूद. This could be a problem in any other team जहाँ पे टैलेंट की कमी हो. So what happens is कि अगर पाकिस्तान में लोग अपने दोस्त जमा करें बाबर आजम, right? So very soon he'll have 3, 4, 5 guys who are maybe deserve to be in the team, then a few more who don't deserve to be in the team. So then you have weak points in the team. इनको अभी फायदा ये है विराट कोहली को कि he has enough people who think like him, KL Rahul, Pandya, Siraj is the same attitude. I mean, you can see these guys hanging out. आप मेरे ख्याल में ऋषभ पंत उसी कैटेगरी में आते हैं जो अलग अलग हैं जो आप कहोगे ये सारे पार्टी एनिमल्स का ग्रुप है और फिर एक साइड में इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप बैठा जो जो चेस खेल रहे होंगे वो है आपके पुजारा अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा साइड में बैठ के वो, सोच रहे हैं वो ये एक लोग अकेला क्या बंदा कर रहे बैठा हैं. होगा जो खाना पा रहा होगा No, तो I think ये group में अगर इंडिया of course different regions different attitudes. दिल्ली के लौंडे, मुंबई के भिड़ू और चेन्नई के इंटेलेक्चुअल्स. आई थिंक इन सब लोगों में ऑफ कोर्स एंड गुजरात हैज अ फ्यू कंट्रीब्यूशन. लेकिन यू रेज अ फैंटास्टिक पॉइंट राज भाई कि चाहे ये बात रहे क्रिकेट या क्रिकेटिंग टीम में या हम जब हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें. आई थिंक हम वी हैव स्पोकन अबाउट इन द पास्ट इसकी डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट पर्सनालिटीज जो इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, क्वाइट पीपल, बॉइस्ट्रस एंड लाउड पीपल, इन सब को मिला के एक टीम बनता है क्योंकि हर एक जगह होती है और हर एक का एक्सप्रेशन at that point becomes important, चाहे वो corporate life हो या team sport हो. And I think that's where there's a lot of combination. So for the quiet people, the people who will take 35 balls to score the first run, क्यों? क्योंकि the man is struggling, no problem. I mean, he still played his way that he finds best. That's the way he will get out of it. मैं उसे ये expect नहीं करूंगा कि वह जाके बैट घुमा के एक T20 की innings खेल के आ जाए. That's not the way that I would expect Pujara to get out of it. Rahane, quiet power, फिर भी very aggressive person, लेकिन उसे वो outwardly दिखाएगा नहीं, लेकिन field में जाके he will try and score, put the bad balls away. He's also doubtful starter, run out हो चुका है एक बार, थोड़ा ढीला हुआ लगता है. But then when the men came together, that is what they do best. They have silent and quiet power. And इसे बैलेंस काउंटर बैलेंस करने के लिए देयर आर आल्सो बॉइस्टरस पीपल हु ब्रिंग देयर एटीट्यूड टू द गेम. सो इस कॉम्बिनेशन से टीम बनता है. आई एम ग्लैड दैट दीज डिफरेंट पर्सनालिटीज कैन को एग्जिस्ट इन द टीम. लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि दीज आर विन्स. व्हेन यू हैव लॉसेस एंड टफ टाइम्स, you also have to recognize that there's not just one kind of personality that's going to get people out, or get people out of it. And Kohli के साथ उसके तरह के जो एक outwardly aggressive log hain, I tend to find that he handles them better than the other quieter types. The other quieter types have to individually perform to keep noticing that they are part of the team. तो वो थोड़ा सा एक I think that's a style of captaincy. But yeah, ये देखो ये तो हर टीम में होगा ना. I mean, I do think though कि there is a mutual respect. एक होता है ग्रुप मैं I want to clarify negative connotation में नहीं कहा. That's not group बंदी. It's basically just people are having similar attitudes. They're also I understand. different attitudes. Yeah. But I think there is mutual respect and there is understanding of everyone's roles. And I haven't seen anybody being forcefully tried to change who they are. So I think that has been the success part, which जिसका credit फिर आप दोगे क्या नाम है कोच कौन है रवि शास्त्री. सॉरी शास्त्री को कि एटीट्यूड जिसका जैसा है ना उसी को फर्मेंट किया गया. यानी कि दिस इज हु यू आर, नो हु यू आर एंड देन परफॉर्म इन हु यू आर. वी नॉट गोइंग टू क्वेश्चन यू अबाउट दैट. कैपेबिलिटीज टैलेंट सब में है लेकिन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्ले है. तो किसी को चेंज करने के लिए कहा नहीं गई. ये सबसे बड़ा मसला होता है जो मैंने पाकिस्तान में नोट किया. फॉर एग्जाम्पल फखर जमान वाज पहली बॉल से मारने वाला. समवेयर अलोंग द रोड दे ट्राइड टू चेंज हिम इनटू रोकूंगा बॉल पे खेलूंगा. हैदर अली आया, स्वॉश बकलिंग बैट्समैन,
Then he gave an interview. I've been told कि मैं stay करूँगा, wicket पे longer खेलूँगा. Well, that's taking you away. Nobody's questioning पंत के out हुआ जा रहा है. He's not replicating the same thing. But that happens. You have to understand and give them. So I think they've gotten some things right, and also this is one of the once in a generation team. I think. Absolutely. I think the bowling is for sure. क्या हो ऐसा रहा है कि the bowling is rescuing you from poor batting performances and collapses क्योंकि they take 20 wickets in every game and उन्हें confidence है कि वो किसी भी situation से even tougher ones right when they meet Root who's in super form या somebody who's stonewalling you they're still finding answers लेकिन that is saving us from a few other batting questions. For Yes. example, you have Rohit Sharma, who is now a definite starting person in the team. लेकिन उसके mode of dismissals to the short ball and that he is defending himself that ये तो यार मारने वाली बॉल थी. I can understand. लेकिन मार्क वुड के साथ उसने जैसे विकेट गवाई अपनी. That is after hitting him for a six, after being three people in the same place, and उसी trap में पड़ जाना. That the ball was there to be hit, I will still hit it. He gave a catch straight in the hand of Moeen Ali. And this is the second dismissal that he had in the series with a similar kind of way. So, what do you bring to the table as an understanding? Are you just defending the way you are always? That is question. That is something worth questioning. Pujara also and Rahane as well. Yes, they played well in my opinion. Lekin they have to put the bad balls away even more. I did see कि starting में वो लोग singles भाग रहे थे and they were trying to keep the score up and there was a way of getting out of it. But I think maybe they required to kick on a little bit faster and make sure that अगर 100 ball खेल लिए हैं तो 100 ball में 100 to 200 balls में at least your strike rate doubles and you're at least better than your previous strike rate. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप run a ball मारें लेकिन at least better than your first 100 balls and then you so break innings a little bit. ये Yeah. थोड़ी बुरी आदतें जो है ये छिप जाती हैं because of a very good bowling lineup. But even Pant, he has to realize that I get frustrated with Pant because he brings me joy as well as he brings me frustration. That oh my God, this is an amazing shot, audacious shot. लेकिन उसी तरह he's flashing at everything. So shot selection, which was his key win in Australia, also in India when England toured India, वही shot selection and judiciousness थोड़ी missing थी. तो उसे लोग expect कर रहे हैं मारने के लिए, उसे मार के आएगा. So, but he will understand his game. He's young. वो improve होगा. But Rohit Sharma, I expect a little bit more. Rahane and Pujara, I expect a little bit more. Right. I think ये तुम्हारी बातों से ना नीरज, it almost reminded me of the Pakistan team of the 90s. कि वो हमेशा बैटिंग उनकी कहीं ना कहीं जाके फ्लॉ करती थी और बॉलिंग रेस्क्यू करती थी. Very funnily, for whatever reason, I mean, batting is not performing at par, and you're right कि उनकी बैटिंग जो frailties हैं, अगर कह सकें आप उसको frailties, वो the bowling is hiding them. And that, but then again, I think जो team आप कहोगे कि all rounder, maybe one of the best teams in the world, was either the West Indies of the 70s, जहाँ bowling batting दोनों ही top थे, मतलब 1-all, या फिर ऑस्ट्रेलिया की शेन वॉर्न के जमाने की मार्क स्टीव वॉ की टीम. Oh my God. Yeah. I mean, that team again was 1-all. You were like, there was no cracks in that team. Invincible. This Indian team is actually more like the Pakistani team with a little better batting lineup. Yeah. Of the 90s, जो कि was a super, मतलब वो किसी भी batting lineup को they could get them out. तो ये strength इंडिया में कभी experience नहीं किया, and I think that is a wave that India needs to ride. So होता है, I mean, there are always, things to different aspects of your team. Yeah. Talent तो on paper सारा मौजूद है. I think it's just execution wise मसले होते हैं. I think ये issues one days में भी आए हैं जो crucial, अगर ये जो point out किए नीरज में issues, यही वो issues हैं जिनकी वजह से crucial games हारा है इंडिया recently. Yes, For example, World Cup में, One Day World Cup में या World Test Championship में. तो वो है, लेकिन I think these are all workable issues. और overall जो है, I think you should enjoy India का ये particular win. I mean, I think this is, again, you can't take anything away. I mean, to get England out the way they did it, a lot of people were saying that England is gonna win the game. Lekin the way Shami and Bumrah fought, and then what the bowlers did with the England side in the second innings was unbelievable. So that is something to cherish.
and enjoy. Series heavily tilted in India's favor after this. मैं इस पे एंड करना चाहूंगा कि I think England was woefully unprepared for this test match, for this series. Mhm. Every Butler, their preparation for this test series was the 100. मतलब Yeah. in England का मसला ये हो रहा है कि the 100 is I'm enjoying the 100, by the way. One of the reasons I'm enjoying the 100 is because it's equal representation of women's cricket with men's cricket. Yes. Okay, that aspect I completely love. And then some of the Indian players are actually, Shafali Verma is doing, Jemima Jemma Rodriguez. Actually, Rodriguez is doing Jemima well. Rodriguez is awesome. That is some player. Anyways, so I'm just disappointed कि पाकिस्तानी कोई भी player नहीं गया उसमें for whatever reason. I don't know the reason. उन्होंने एक select नहीं गया, लेकिन I would have loved to see a few of the Pakistani girls in there as well. But इतना 100 को प्रमोट किया गया कि वाइटलिटी ब्लास्ट के भी प्लेयर्स निकाल के इसमें डाल दिए गए, T20 Yeah. में चल रहा है, 100 में भी चल रहा है, और फिर वहां से प्लेयर्स उठा के टेस्ट टीम में आए हैं, इंक्लूडिंग मोइन अली, जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो. Dom Shibley, I don't know how he's a test player. I mean, I don't remember anything that he's done for England since he's debuted. Mhm. I can't recall a performance जहाँ का Dom Shibley. Oh no, Rory Burns up and down, very flawed technique, very difficult technique for swinging ball, और जिस क्वालिटी की bowling England इंडिया में कर रहा है इस वक्त. Um, Butler and Bairstow, again, very difficult to adjust from between those two mindsets. Butler is still trying to prove himself as a test player. Bairstow is better, I would say, Yeah. in test match. Moeen Ali, again, 100 की कैप्टनसी करते हुए उठा के आपने उसको टीम में डाल दिया. Very different mindset, not easy to adjust, And then bowling में again, Ollie Pope hasn't played that many test matches. Anderson पे लेने की पूरी टीम आ गई है. Spinner आपके आदिल रशीद खेल नहीं रहा. I don't know why they didn't play Adil Rashid. He's been Yeah, well, performing. he's been out for a very long You time. know, maybe I think he actually deselected himself from the test squad. I think to pay He attention to did. white ball cricket, but I they say could that. recall him, and he is bowling very well in the 100, by the way. Yeah. And so I think England की team is actually way weaker than the Indian team. ये इंडिया की बड़ी settled test team है जो कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आई, इसने इंग्लैंड को इंडिया में हराया बड़ी कन्विंसिंगली. और यहाँ पे इनके अपने होम यार्ड में आके स्विंग, अगर स्विंग होगी बॉल तो हम भी स्विंग कर सकते हैं, एडवांटेज तो न्यूट्रलाइज हो गया ना. So I think England, I think is has to really think about it. They're going to lose the red ball cricket. Yeah, and I think they also are trying to fix a lot of the opening woes. बहुत बहुत वक्त से Zach Crawley has just been given a break, क्योंकि and Ollie Pope as well in a sense. And ये दोनों I mean, there's also Dan Lawrence जो पिछला टेस्ट खेला था. So Dan Lawrence was a fantastic 50 in India. I remember he really played a great inning. And Zach Crawley, though I followed some of his scores from before, and he's had some really impactful numbers. इन दोनों को break दिया गया. And this is not the rotation policy वाला break जो अभी इंग्लैंड दूर जा चुके हैं. Form break दिया गया. But they've been, so I think they are going through a tough phase. इस फेज को लेके एंड इस तरह के परफॉर्मेंस को लेके 5-match series, which is a big thing, right? Which is amazing, which is kicking off the next WTC. I am glad that that's we have been preparing for that. Even so much so, अगर आप notice करेंगे, Rahul Dravid, the team that he took with Shikhar Dhawan to Sri Lanka, वहां से पृथ्वी शॉ एंड सूर्य कुमार यादव को उठा के इस स्क्वाड में ले आए क्वारंटीन कराने के लिए. दे मिस्ड द लास्ट कपल गेम्स ताकि इस टीम को बैकअप मिले इन केस रहाणे इज आउट ऑफ फॉर्म और इंजर्ड और समबडी एल्स. हम तो डे 3 के बाद या डे 4 के बाद ऑनेस्टली ये भी डिस्कस कर रहे थे हमारे दोस्तों के साथ कि व्हाट हैपेंस इफ पुजारा एंड रहाणे डोंट क्लिक, डज सूर्य कुमार यादव गेट अ लुक इन द नेक्स्ट गेम? And all of these things, and हमारे opening issues भी थे. But you're right, it's a very settled squad which has a lot of backup options. England में ये squad भी unsettled है and they don't have a lot of backup options, so they have to look at the 100. And I think it became a consequence of having fewer players in form. Yeah, I think इनका they're missing Ben Stokes particularly a lot. Ben Stokes big loss. They're missing Broad. Maybe didn't perform like outstanding in the first test, like they're missing Broad. But मैं यही कह रहा हूँ कि they have to Chris Woakes. Yes. They have to rely, and Chris Woakes have been missing for a long time. They have to rely back on Broad and Anderson. Yes.
who've been playing for like 10 years. So मसला है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि अगर 100 भी देखता हूँ मैं तो हाँ, there I've seen some players, but everybody's in that 100 T20 mindset. सो आई डोंट नो Correct. हाउ काउंटी में इतनी तो देखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इनकी बैकअप ऑप्शन है कितने इनके पास। जब वही तो ऑस्ट्रेलिया चाहिए. को इतना बड़ा मसला हो गया, लुक व्हाट हैपेंड टू ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। हम तो बात करते नहीं है दूसरे की, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है भाई, वरना सबकी बात करें। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छे अल्फाज में जो बजाई ऑस्ट्रेलिया Yes. की, आई मीन एम्बैरेसिंग, Yeah. ultimately embarrassing. So if Australia can get to that point, yeah, there's something is wrong. Yeah. Something is wrong. I mean, very good if you're an Indian cricket fan. Very good, you can laud about it, but it doesn't bode well for world cricket. अगर आप Sri Lanka is almost gone, और Thank South God. Africa is disintegrating. ऑस्ट्रेलिया का भी ये हाल होता है, इंग्लैंड ले लेके रह गया, वो भी टेस्ट में ये हाल होता है, तो then who are you playing against yourself? Yeah. So फिर तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के एटलीस्ट ये है कि मे बी टॉप प्लेयर्स नहीं है, बट दे डिडंट हैव एनी बैकअप्स. दिस Correct. वाजंट ऑस्ट्रेलिया. Yeah. नेवर हैज इट बीन द केस कि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे बैकअप्स ना हो. Yeah. इट्स द I think फर्स्ट टाइम इन लिविंग मेमोरी जो मैं very much. And I think New Zealand and the really upswing of West Indies, they're becoming a न्यूजीलैंड आप very कह सकते हो. yeah. वेस्ट इंडीज अभी हैज अ लॉन्ग वे टू गो. Yeah. वेस्ट इंडीज ऑनेस्टली हैज अ लॉन्ग वे टू गो. लेकिन न्यूजीलैंड, हाँ, न्यूजीलैंड इज एट पार. Yeah, but West Indies के भी जो नए players आए हैं, and which you will see in the series against Pakistan also, that I think Joshua, I forget his name, the wicket keeper, De Silva. Joshua De Silva, Seals as a new player, but also Jason Holder is a class act. I think he's perfectly balancing the team as an all-rounder. Brathwaite. Craig Brathwaite's new captaincy at this point, and a lot of their middle order, Jermaine Blackwood, he will go and score no Austin matter what the Chase. situation. Chase Austin is a Chase, good player. जो bottom उठा सकता है. They Jason have Mohammed. Jason Mohammed is a good yes, player. Mohammed is correct. I think they have a core that is developing. उनके जो contracts just अभी recently renew हुए हैं, and Carl Mayers, who had that fantastic debut, ये सारे players वहाँ पे अभी अब deep आ रहे हैं. In the WTC, I am actually predicting that someone like West Indies, I will back them to be one of the top 4 teams who will move up the ranks. ये team tour भी करेगी और ये team जीतेगी भी. And I think it's time for West Indies board to be more confident that to ask for not just 2 match games, but much longer than that. 3 test series, 4 test series. And I want West Indies to come up. क्योंकि हो ऐसा रहा है कि then you only have the same people who are always on top. Yeah. I want that to expand a little bit more beyond that. Then cricket thrives. And Yep. West Indies have जीती है, and say Bangladesh beating Australia at this point, even if it's a T20, I want that to kind of raise cricket and the interest in cricket in different parts of the world. That की power का concentration सिर्फ एक दो जगह जब होता है ना, तब सब बाकी सब it affects the entire game worldwide. And unfortunately, I mean, Afghanistan cricket ka, with everything happening in Afghanistan, we don't know what the future is. Like, otherwise, on paper, what Afghanistan team was growing to be a very good team, at least in T20 method, they could beat anybody on their day. Oh yes. And they could have grown to be, I think they beat West Indies too. Or maybe they beat Zimbabwe, actually. They beat Zimbabwe in a test series. So it was a growing team as well. Hopefully, it remains the same way. We'll see what happens. Nobody's sure with the Afghan team. Let's hope that they're able to, the cricket series with Pakistan is the next thing coming up for them, which is supposed to be in Sri Lanka while the IPL is going on, right? Because of the IPL, it's moved to Sri Lanka from Dubai. Okay. Then so thoughts and prayers with the Afghan team. Hopefully, we keep seeing all these lovely stars who've been entertaining us. That's all we can hope for. But other than that, hopefully Pakistan की टीम भी जो है ना, वो it has again, पाकिस्तान की टीम आपको पता है कि टैलेंट तो कमी नहीं है. अगर ये सही सिलेक्शन हो, I think they have good players. I just feel के कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है सब प्लेयर्स में. They somehow or the other get shattered. थोड़ा सा इनके एटीट्यूड थोड़ा बेहतर हो, थोड़ी सी सिलेक्शन में एक दो चीज़ें हो, तो मे बी दे कैन एक्चुअली बी टॉप कंपेटिटर्स एज वेल. Correct. सो एंड वील होप फॉर द डे कि वन डे पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज देखने का मौका मिले, और फिर मैं और नीरज इस पे बात करें. तो मेरे ख्याल में काफ़ी देर हो गई. नीरज, एनी लास्ट थॉट्स, अदरवाइज वील रैप अप.
I've been looking forward to more test matches coming up. So बस टेस्ट मैचेस होते रहे इंटरेस्ट होता रहे 100 अच्छा है 100 और टी20 में सिर्फ 20 बॉलों का फर्क है तो मुझे दोनों में इतना कुछ फर्क ऐसे गेम नजर आ नहीं रहा है बट वॉट एवर द केस अटेंशन स्पैन जब कम हो रहे हैं आई वांट द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम टू गेट a lot of attention. मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त अमित was in the Lord's stand with his daughter watching the game. My hope is that I can take my daughters to watch a test game as well and test matches तब तक रहे when they Right. and they still have the interest. So राइट, तो हमारी दुआ है कि नीरज आपकी ये ख्वाहिश कबूल हो और आप लंदन जाएं अपने बच्चों के साथ और आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ वहाँ पे देख रहा हूँ और पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच होता है तो इसके बाद in a WTC final. इन अ WTC फाइनल दैट विल बी अमेजिंग. तो अपना ख्याल रखिए यार. दिस इज क्रिकेट टाइम. गुड नाइट.